We have already studied factor theorem in previous part. Now we'll do the related questions of exercise 2.4, that is question number 1, 2 and 3. So let's start. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. We are given 4 parts in this question. हर part में हमें determine करना है कि x plus 1 given polynomial का factor है या नहीं. First step is x plus 1 equals to 0 implies x equal minus 1. Polynomial जो हमें given है that is x cube plus x square plus x plus 1. अब हम x की जगह minus 1 put कर देंगे. In this way, what we'll get? Minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 and plus 1. Minus 1 cube is minus 1. Minus 1 का square is plus 1. Minus 1 and plus 1. हम plus एक साथ कर लेंगे. Plus 1 plus 1 plus 2 and minus 1 minus 2 which is equals to 0. जब हमने polynomial में x की वैल्यू रखी तो हमारे polynomial की वैल्यू 0 आ गई. So we can write yes, x plus 1 is a factor of px in this way. We'll see next part now. X raised to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. We'll do the same. First step is x plus 1 जो हमें given था कि फैक्टर पे चेक करना है हमें. Implies x equal minus 1. px इस क्वेश्चन में that is changed. Here the polynomial is x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. In place of x, we'll put here minus 1. Minus 1 raised to the power 4 plus minus 1 raised to the power cube plus minus 1 square plus minus 1 and plus 1. Minus 1 raised to the power 4. जब power हमारी even number है, it will be 1. Here power is odd number, minus 1. Then minus 1 square is plus 1. Then minus 1 and then plus 1. अब हम plus एक साथ लिख लेंगे. Plus 1 plus 1 plus 1. That is plus 3 minus 2. What we will get? 1. हमारा polynomial की वैल्यू जो हमने minus 1 रखा है x की जगह 1 है. It is not 0. So we will write here no, x plus 1 is not the factor of px. Now we'll see third part. We'll do the same thing. X plus 1 equals to 0. X की वैल्यू हमें मिल गई थी minus 1. In this question we are given polynomial x raised to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. x की जगह minus 1 put करेंगे. What we'll get? Minus 1 raised to the power 4 plus 3 into minus 1 raised to the power 3 plus 3 into minus 1 square plus minus 1 and plus 1. Here power is an even number, so plus 1. Minus 1 cube is minus 3. Minus 1 cube is minus 1 and when it will be multiplied by 3 we'll get minus 3 here. Minus 1 square is 1. 3 into 1, 3 minus 1 plus 1. This is positive and this is. So 3 plus 1 plus 1, 5. Minus 3 and minus 1, that is minus 4, which is equals to 1. No, x plus 1 is not factor of px here. Now we'll see the fourth part. x plus 1 पे ही चेक करना है यहाँ पे भी. Implies x की वैल्यू minus 1. We are given the polynomial x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2. Here it is x.
नाउ अब हम x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 into -1 plus √2. -1 cube is -1, -1 square is +1, plus minus minus. Here it is -1 into -1 here again. Then minus minus is plus, so we are having 2 plus √2 in bracket. हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, plus √2. We'll get here -2. We'll open the bracket, +2 plus √2 plus √2. -2 plus 2, that is 0. What is left here? √2 plus √2, which is equals to 2√2. So हमारी polynomial की वैल्यू 0 नहीं आई. So in this question also, no, x plus 1 is not a factor ऑफ px. इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स थे, उसमें से सिर्फ फर्स्ट पार्ट में x plus 1 इसका फैक्टर निकला, एंड इन रिमेनिंग 3 पार्ट्स इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. We'll see second question now. Again we have to use factor theorem to determine whether gx, in each question we are given a gx and a px, two polynomials in each of the following cases. हमें चेक करना है कि gx है वो px का फैक्टर है या नहीं. So we will check. gx equals to 0 रख देंगे, x plus 1 equal 0 implies x की वैल्यू हमें मिल गई -1. वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था चेक करने के लिए. 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1 इज द पॉलिनोमियल. हम अब x की जगह -1 पुट कर देंगे. व्हाट विल गेट 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 into -1 -1. -1 का क्यूब इज -1. -1 into 2 -2 plus 1 will come here because -1 का square is +1 plus plus plus. -2 into -1 that is +2 and -1. अब हम ऐड एक साथ कर लेंगे. +2 and +1 is +3, -2 and -1 is -3. We will get our answer 0. जब हमने इस फैक्टर को चेक किया इस पॉलिनोमियल पे हमारा आंसर 0 आ गया. सो वी कैन राइट है यस, gx is a factor of px in this question. Now we'll check the second part. Gx here is x plus 2. So we'll put x plus 2 equals to 0. In this way we'll get the value of x which is -2. In this part we are given polynomial equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. अब हम x की जगह -2 पुट करेंगे. -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1. We'll get here -2 क्यूब is equals to -8. 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी ऑड नंबर है, माइनस विल कम हियर. प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 -3 इंटू -2 which is equals to -6 plus 1. We'll solve it. -8 plus 12 -6 plus 1. Addition part first. 12 plus 1 13 -8 -6 means -14. We'll get -1 from here. So we can write, हमारा आंसर 0 नहीं आया. No, gx is not a factor of px in this way. Now we'll see the third part. Px is equals to this and gx is x minus 3. X minus 3 will be equals to 0, implies we'll get value of x equals to 3. In this part we are given polynomial x cube
minus 4x square plus x plus 6. We'll replace x by 3. We'll get here 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. 3 cube is 27 minus 4 into 3 square is 9 plus 3 plus 6 9. 27 minus 36 plus 9. 27 and 9 को हम ऐड कर लेंगे. 36 minus 36. We'll get 0. हमारा सॉल्व करने के बाद 0 आंसर आ गया. So we can say yes, gx is a factor of px. Now we'll see the third question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. We'll see different parts in this question. उसमें हमें given है x minus 1 फैक्टर है px का. इसमें हमें चेक नहीं करना है. अगर ये फैक्टर है px का तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. x minus 1 इक्वल्स टू 0 जैसे हम पुट करते थे implies x equal 1. उसके बाद हम हमेशा क्या करते थे, जब हमें चेक करना होता था हम p1 निकालते थे और अगर वो 0 आ गया तो वो फैक्टर है. बट इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये फैक्टर है तो हम डायरेक्टली px तो हमें क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k. इसमें हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं p1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज हमें पता है जब हम 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे x में तो हमारा आंसर 0 आएगा. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो p1 हम कैसे लिख लेंगे, x की जगह 1 लिख देंगे. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. 1 square plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus k equals to 0, k equals to minus 2. In this way, we can find the value of the hidden constant in a question. Now, we'll see the next part. Px is equals to 2x square plus kx plus root 2. X minus 1 was a factor. X equals to 1. Px in this question is equals to 2x square plus kx plus root 2. P1 equals to 0. हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं ये बात, since x minus 1 is a factor of px. In this way, you can give a reason. अब x की जगह हम 1 पुट करेंगे. 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2 equals to 0. 1 square is 1, 2 plus k plus root 2 equals 0. अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k को हम इस साइड रखेंगे, बाकी को हम दूसरी साइड लिख देंगे. प्लस का रूट 2 है तो इधर जाके माइनस का रूट 2, प्लस का 2 है तो माइनस का 2. वी कैन टेक माइनस एज कॉमन. व्हाट विल गेट इनसाइड? रूट 2 plus 2. So this is the value of k in this part. We'll see next part. Px is equals to kx square minus root 2x plus 1. x minus 1 is a factor. हम उसे equals to 0, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई. Px in this question is given kx square minus root 2x plus 1. P1 will be equals to 0 since x minus 1 is a factor of px. K into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equals to 0. K into 1 square is k, root 2 into 1 minus root 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब k इधर तरफ रख के हम बाकी कांस्टेंट दूसरी साइड लिखेंगे. माइनस रूट 2 विल चेंज इनटू प्लस रूट 2 एंड प्लस 1 इनटू माइनस 1. सो वील गेट द वैल्यू फॉर k.
Let's see the last part. Px equals to kx square minus 3x plus k. We are given x minus 1 is a factor, x equal 1. Px in this question is kx square minus 3x plus k. P1 will be equals to 0 since x minus 1 is a factor of Px. K into 1 square minus 3 into 1 plus k equals to 0. K into 1 square is k, minus 3 into 1 minus 3 plus k equals to 0. Plus k 2k minus 3 equals to 0. माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड पे प्लस 3, k equals to 3/2 is the answer. So in this way these questions are done. If you have any doubt in any of the part, you can comment in comment section.